not teaching science. If you are a science teacher, it is very good, but I want to know that how many of you are here in my meeting, in today's meeting, who are not teaching science, so that I can generalize some topics, so that the teachers who are not teaching science, they can also be benefited. Please write in the comment box if you are not a science teacher. Write your subject. Do not write me. Write your subject. Okay. I see English, maths. Okay. So thank you very much for joining today, and let me start today's PowerPoint so that we can formally just start this session. Now, is the PPT visible? Just write yes or no. Okay. And am I audible to all of you? My voice is clear. मेरी आवाज साफ साफ पहुंच पा रही है आप तक? Yes or no? Thank you very much. So, teaching strategies in science, and we are connecting this session under Patliputra Sodhya Complex. Again, my name is Vikas Kumar. I am a master trainer of CBSE, as well as I work as a cybersecurity mentor in NCERT. Now, the topic. Let me do it first. Introduction of teaching strategies in science means, what are we going to discuss today? We are going to discuss about the effective teaching strategies. Means all the science teacher, how we are here, we have our book of any class, we can say from 5 to 12th, 10th. We have our science book, we have our defined syllabus, we have the curriculum, and in each and every academic session, we teach our students. We use different strategies so that they can learn. We use various tricks and tactics we use so that we help them to understand the key concepts of science. But after that also, after that much of labor also, sometimes we feel that we are not successful. Sometimes we feel that our students are letting us down. Sometimes teachers feel that I worked a lot in this classroom, in this particular section, but the result is not according to that. So they are just letting me down. And now sometimes it may happen, as we all are human, that we decide that no, I'll not be doing that much of labor for these kinds of pupil. So in today's topic, we will be discussing about some teaching strategies that makes teaching science a lot more effective than it is. And let me tell you one thing. I'm not particularly going to tell anything about the primary classes, the secondary classes, or the senior secondary classes. What we will be doing today is we will be generally discussing. We will discuss about those key points which will be useful for the primary sections also, for the middle sections also, for the secondary and the senior secondary. So you do not have to worry if you are teaching in senior secondary, or you do not have to worry if you are teaching in the primary section. This meeting, I hope, will be helping all of you. And after the session, after we complete 55 minutes of the session, we will have a 10 minutes of questionnaire program in which you can ask your doubts. Now, effective teaching strategies are essential for engaging students and fostering a love of science. Now, what happens that when a teacher from primary class starts
teaching science to a student, the students find it very fascinating because they get to know about a lot of new things, like what is wind, how it is blowing, why the water is cold or why the water is colorless or blue, whatever they are understanding. Why we see the sky as blue, but it is not actually blue. Why the stars twinkle. When students get to answer these kinds of questions, they find it very fascinating. उनको काफी मजा आने लगता है जब वो छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हैं ना. उनको मजा क्यों आता है? क्योंकि जब तक एज अ टीचर हमने उनको साइंस पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक वो कई सारी चीजें इमेजिन कर रहे थे. वो आसमान में देखते थे, पत्ते हरे दिखते थे, सॉरी आसपास देखते थे, उनको पत्ते हरे दिखते थे. वो सोचते थे कि भाई आखिर लीव्स ग्रीन क्यों हैं और सूखने के बाद येलो क्यों हो रहे हैं. वो आम खा रहे हैं, आम का सीजन चल रहा है, कच्चा आम खट्टा लग रहा है, वही आम जब पीले कलर का हो गया, जब पक गया तो मीठा लगने लगा. नाउ स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग दैट व्हाई इज इट हैपनिंग. बट ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक नहीं चलता. व्हाट वी जनरली up to standard 7th or 8th, the students are very much interested to learn science, but after that the ratio starts decreasing. कुछ students भागने लगते हैं. कुछ जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको ये बात पता है that science is one of the most important subjects if you want to achieve a nice place in life. Now our goal is to make science interesting so that they study by their own choice. They do not have to study because oh it's a burden, nothing can be happen without it. इस टाइप की सोच ना हो उनके साथ. So I hope that this presentation will explore innovative approaches. I have tried to include various kinds of teaching techniques of science. Also, I have tried to include some strategies to build a better assessment questions. Now, what is the importance of engaging students in science? Fostering a love for science from an early age is crucial for developing critical thinking skills and preparing students for future STEAM careers. Now, let me tell you one thing. Whatever subjects I or you are teaching as a teacher, each and every subject does not literally helps in a person's life. Like if an English teacher is teaching literature to the student, now the student do not actually need to remember all the stories, all the poems, all the prose that were taught from standard nursery to 12th or graduation. What is needed? The vocabulary which he is getting or she is getting, the understanding about the society, the deep thinking, and a better way of communicates. These are the kinds of things that a student gets to learn when he studies literature. In the same way, when we teach our students about science and maths, these both subjects give a critical thinking approach to the students. Now, critical thinking approach is very useful in a person's life. Many times it happens that we face dilemma in our day-to-day life. We are not able to think that what can be the possible solutions of these kinds of problems. Now, in that scenario, if a person is having critical thinking ability, that person is much likely to solve all those problems that are lurking around. So, critical thinking skill is very important. We need to make our students understand. We need to make our students understand that if they escape from studying science or maths, it may happen that they lack a very important skill. Some people are texting that I am not audible. Is this so? Am I not audible? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं दैट आवाज नहीं आ रही है. सुबोध सिंह सर, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज राइट इन द. ओके, थैंक यू.
एक दो लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शंस. Thank you for your comments. Now, engaging students through hands-on activities, real-world applications, the interactive demonstrations can spark their curiosity and motivation to learn. Now, what happens in higher classes, especially when we start teaching students about the kinds of science which is not actually visible to that child, that pupil. Like when we start teaching them about electrons, protons, neutrons, or when we start teaching them about cells and the organelles and the other parts of the body that is not actually visible, and the pupil is not actually able to feel it. Now they start to get bored. They do not find it interesting. They do not find it enjoyable. So we need to find a way so that that connection is maintained, that connections do not break. When a biology teacher teaches about digestive system, excretory system, respiratory system, the children are very keen to learn and they are very interested. But again, the same teacher when starts teaching about the types of tissues and the types of cells, about the animal cell, now the students are feeling bored. So there is a need to change the strategies according to the topic. So what is happening? They are not thinking it as real world scenario or real world problem. क्योंकि उन्हें सेल दिखाई नहीं दे रहा ना, दे आर नॉट ऑल्सो एबल टू फील द सेल. मैं भी नहीं फील कर पाता हूँ. मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं यही सोचता था कि अरे यार सर या मैम सेल पढ़ा रही है, कितना छोटा होता होगा. आई टेल यू एन एग्जांपल. मैं 9th क्लास के एक बच्चे को पढ़ा रहा था and I was showing the different types and size of cells. Suddenly he pointed a cell, बोला ये तो इतना छोटा है, मसल देंगे तो मर जाएगा. Now you can imagine that वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि सेल का साइज कितना हो रहा है. उसको लग रहा हो रहा होगा इतना छोटा, हाथ में आ जाएगा, पकड़ के मसल देंगे, खत्म हो जाएगा वो. Now this is where a role of teacher is needed. This is where we need to tell that kind of students कि भाई क्या है, कितने छोटे साइज का है, कैसे दिखेगा और क्या क्या चीजें हो सकती. Interactive demonstrations can spark their curiosity. Now see, we are in a digital world. We are connected today in a digital way. Approximately 3,000 people are connected here. So we are digitally connected. हमारे schools में smart boards लगे हुए हैं. ज्यादातर स्कूल के हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए. हर क्लासरूम में नहीं है तो एटलीस्ट एक या दो स्मार्ट बोर्ड हर स्कूल में. मैं सच बता रहा हूँ, कंप्यूटर टीचर से ज्यादा अच्छे से आप यूज कर सकते हैं एज अ साइंस टीचर स्मार्ट बोर्ड्स को टू टीच साइंस. बिकॉज कंप्यूटर टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी. वो पीपीटी बनाना सिखाना होगा ना, तो वो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, वो कंप्यूटर लैब में ले जाकर प्रेफर करेंगे ताकि बच्चे सीख पाए, वो भी करके देख पाए. उनको जब एक्सेल का फॉर्मूला बताना होगा ना, तो वो लेके जाएंगे उनको उठा के कंप्यूटर लैब. बट आपके लिए इफ यू एक्चुअली वांट टू शो सेल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, आप स्मार्ट बोर्ड पे सिमुलेशन वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं उनको. आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच के मूवमेंट्स, उनमें ब्राउनियन मोशंस वगैरह को दिखाना चाहते हैं, यू कैन शो इट थ्रू सिमुलेशन वीडियो. आप कॉम्प्रेसिबिलिटी शो करना चाहते हैं, सिमुलेशंस आर देयर. आप डरते हैं कि आप अपने बच्चों को केमिस्ट्री लैब में लेके जाएंगे और सोडियम प्लस वाटर का रिएक्शन अगर आपने करके दिखाया तो दैट कैन बी हैज़ार्डस. आप वर्चुअल लैब पे दिखा सकते हैं बाय यूजिंग दैट ओनली स्मार्ट बोर्ड. सो नाउ what is needed is interactive demonstration. Why I am telling this interactive demonstration with smart boards? होता क्या ना, when I go as a teacher, जब मैं जाके बोर्ड पे लिखता हूँ Mg plus O is equal to MgO, magnesium burns in the presence of oxygen and the product is magnesium oxide. Now चूंकि मेरा कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया है, इसलिए जब मैं Mg प्लस O इज इक्वल टू MgO लिखता हूं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. बट एक बच्चे को क्या दिखता है कि मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, ऑक्सीजन मिला देना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा.
हम उसे समझा सकते हैं कि नहीं जलाना पड़ेगा ना। वो वेरी नॉर्मल क्वेश्चन विल अपीयर कि जलाना क्यों पड़ेगा, जलाने से ऑक्सीजन कैसे कनेक्ट हो रहा है मैग्नीशियम से। एंड दैट इज व्हाई इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन इज नीडेड। Now, again, how do we learn science? How do students learn science? Now, the first thing, learning is active. So if any person who wants to learn science, he or she will have to be active. Teaching is student centric. As a teacher, if you want your students so that they can learn science, you will have to find the approach that is student centric, not teacher centric. As I was telling, magnesium plus oxygen हम लोग दिखाते हैं, हमारे दिमाग में तो आता है कि नहीं नहीं ऐसा होगा। When we tell कि सोडियम प्लस वाटर का रिएक्शन कराना है, हमारे दिमाग में वो एक एक प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो शायद हमने कभी 12th या ग्रेजुएशन के एक्सपेरिमेंट्स में लिखा होगा, या हमने जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखा होगा लैब में, तो हमने देखा होगा कि नहीं नहीं कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बट इन टुडेज सिनेरियो, व्हेन अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट that sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas is liberated, what students imagine is some kind of crazy science videos that are available on YouTube, where they just take sodium and they throw it in pond or lake or in any water body, and they see a blast. The video gets viral. The students are watching that only and learning that only. So when we are teaching science, we have to be student centric. Now, one thing I would like to tell, in today's scenario, if you are teaching in coaching, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट आज क्या हो रहा है कि कई सारे ऑनलाइन कोचिंग वाले टीचर्स आते हैं, सम आर वेरी गुड बट सम आर देयर जो पढ़ाने से ज्यादा बस ऐसे ही कुछ स्टंट्स दिखाते हैं, जहाँ पे ना तो सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात होती है, ना एक्चुअल प्रोसेस की बात होती है, ना एक्चुअल प्रोडक्ट्स की बात होती है, ना ही उन प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, क्यों बनाना, इंपॉर्टेंस क्या है, किसी की बात नहीं होती। आज हमारे बच्चे जिन डिजिटल डिवाइसेस से, जिन डिजिटल एप्लीकेशन से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, उन्हें डिजिटल एप्लीकेशंस पर यह भी दिखाया जाता है कि एक छोटा सा वायल लाफिंग गैस का आप इनहेल करो और आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। एंड वी ऑल नो दिस कैन नॉट बी ट्रू। इतने छोटे से वायल से कुछ नहीं होता, नहीं लेना चाहिए ये भी कोई नहीं बताता, बिकॉज दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी। बट वी एज अ टीचर, स्पेशली वी एज अ स्कूल टीचर, our salary is fixed and our work is a very responsible work. So whenever we are teaching, we have to be student centric, we have to be empathetic, we have to put our feet into their shoes, we need to understand that what might be the questions of the students, and we should try that while we are discussing various things, while we are demonstrating various topics, we should try to solve as much problems as we can. Now, learners interpret and elaborate. This is also very important. Now, we see what happens. सपोज आप नाइन्थ के ही दो सेक्शंस में है, या आप 10th क्लास के दो सेक्शन में है, आप एक क्लास में जाते होंगे जो आपने लेसन प्लान बना के रखा है, आप उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाना स्टार्ट करते होंगे, बच्चे यस सर, यस मैम, समझ गए सर, समझ गए मैम करते हुए, आपको पूरा कोऑपरेट करते हुए बेल के एंड तक पहुंच जाते हैं। नाउ आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे, वहां ये होता होगा कि आप एक लाइन बताए, पीछे से दो बच्चे की सर अगर ऐसा होगा तो क्या इस तरीके का कुछ नहीं हो जाएगा। नाउ व्हाट दे स्टार्ट इंटरप्रेटिंग कि अच्छा ऐसा वाला रिएक्शन करा रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है, इस टिश्यू का ये फंक्शन देख रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, फिजिक्स में भी कुछ चीजें आ सकती हैं कि ग्रेविटी ये काम कर रही है तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। नाउ इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? I always tell my students that we all have a television screen here. About imagination, when I tell them, I always say that we have a smart board here
And when you enter in a science class, you should turn it on and you should start making pictures. When I'm telling about gravity, you should see something falling towards the center of the earth. When I say that a body is in uniform motion, you should see your favorite car going on a very straight road with a very uniform motion, that speed is not changing. If you are able to imagine these things, you're a good student of science. If you're not, if you're just listening to me, you're not a student of science. So when the students will interpret, when they will imagine, and if they will imagine, they will interpret, they will ask the questions, and sometimes it may happen that what they have interpreted is actually correct, but we are not discussing it for the future classes. So we get a chance to elaborate the topic, and that is why the learning of the students increases. Now, learner is recognized as having prior knowledge. Now, this is lacking in today's classrooms. Whenever we go and we start teaching any particular topic, we see that most of the students are not having prior knowledge, the previous knowledge about the topic. So now, how this will happen? If I'm teaching in standard 7, I'll teach in a manner that they will carry something to standard 8. They will start having the prior knowledge of the previous knowledge. So it is a correlated task. We all have to work together. Learner interact socially and with the environment. Again, I was telling you, आज की जो सिनेरियो है, अगेन मैं आता हूँ, मुझे काफी ज्यादा चिढ़ होती है जब मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। लोग बड़ा खुल के कहते हैं कि काश न्यूटन के सर पे सेब की जगह ना पत्थर गिर गया होता, तो आज ग्रेविटी वगैरह के लॉज ही नहीं आते ना। आई डोंट थिंक दैट ऐसे ही हुआ होगा कि न्यूटन सर बैठे होंगे, एक सेब गिरा होगा पास में, उन्होंने काफी कंसेप्ट समझ लिया। व्हाट आई इंटरप्रेट इज थ्रू दिस स्टोरी वी ट्राई टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी, हमारे नेचर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, everything as science, and what you need is to observe. You need to interact with these things, and you need, or you should try to understand that how the things are happening, why it is happening. Now, students' error are seen as opportunity. This line is particularly for teachers. Many times, due to various kinds of pressure, जब बच्चे गलती करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, बट उनकी गलती को हमें एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है. We always say that more you study, the more you get confused. More study, more confusion. No study, no confusion. So if a child is doing mistake, that means the child is studying. So we need to help those children so that next time when they start doing something, they do not do mistake. They do it in a right way. Now, do you understand what is this? Instructional objective domains, how you give instructions to the students, that can be affective, that can be psychomotor or cognitive. We are simply moving towards Bloom's taxonomy. Now, Bloom's taxonomy is very important. When we start studying BA, from that time only we start learning about Bloom's taxonomy, और फिर हर ट्रेनिंग में जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे पास आती है. So it is very important where to use Bloom's taxonomy or why to use Bloom's taxonomy to write learning objectives. Now, why is it important to write learning objective? I want answers in the comment box. Suppose if I'm going to teach acid, bases, and salt in class 10th, why should I write learning objective in my lesson plan or in my copy? Why should be a particular objective be there in my mind? Can it not happen that I just go and I deliver all about acid, bases, salts, and the reactions related to it? The students will get to understand what they need and what they don't need. What do you think? This cannot be happen, or do we not do it? Help us know what understand student after class. Yes, this is the reason. If you have written a, if you have fixed the objective, you will be able to get to know through assessments that what students have learned. To explain nature of substance, that is also correct.
to know their application. Okay. Next, I want more. Please. है ना? किसी मूवी का डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर. आई नीड मोर आंसर्स. प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. क्यों चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव? साइंस छोड़िए, किसी भी सब्जेक्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख के क्यों जाना है? Properties of ACID. Now, learning objective is necessary so that you have a very clear mindset that when you are teaching the student that acids are sarin test, acids release H plus ionic aqua solution, blah blah blah. You should have a particular thing in your mind that why are you teaching this? After your lecture, after your demonstration, after your discussion, what should be the outcome? What should a student understand? Like what is the objective of today's session? आज जो हम लोग कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जिस भी तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को थोड़ा और बढ़ा दे. ये जितनी बातें हो रही हैं या आगे चल के जितनी बातें होंगी आज के 1 घंटे में, उन सब के पीछे का ऑब्जेक्टिव दो है एक्चुअली. पहला ये है कि साइंस की इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, हम लोग ज्यादा इफेक्टिवली क्लास में बढ़ाए. दूसरा ये है कि आपको 1 घंटे का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाए, आप उसको जमा कर पाओ. सो आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट क्लियर हियर. नेक्स्ट, to plan curriculum. Bloom's taxonomy is used to plan curriculum. We all know this and we all use this. Now, planning curriculum is very necessary. Otherwise, what will happen? कि आप पहला चैप्टर बड़े आराम से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए जाओगे, आपसे अच्छा साइंस टीचर कोई नहीं होगा. बट आखिरी चैप्टर के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, उसको एक दिन में खत्म करके जाना पड़ेगा. नाउ प्लानिंग करिकुलम हेल्प्स कि आप सभी पे बैलेंस टाइम दो या वैसे टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दो जिनकी नीड ज्यादा है. To align objectives to assessment techniques and standards. Now again, I have thought about an objective. I'll be preparing the assessments. Bloom's taxonomy is required so that my objective, my assessment techniques are aligned together. मैंने जो पढ़ाया है वो मेरी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, तो मेरा असेसमेंट भी वैसा ही हो कि मेरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुई कि नहीं, आउटकम आया कि नहीं, वो पता चले. तो इनकॉर्पोरेट नॉलेज टू बी लर्न इफेक्टिवली. It is quite common to facilitate permanent acquisition of learning, to help students develop higher thinking skills. Now we understand this. Bloom's taxonomy, that was in 1956 and again it changed to 2001. I will not be discussing this. हमने इसके बारे में काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है, कई बार किया, पर्टिकुलरली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के टॉपिक पे भी कर रखा है. So I need to discuss this. This revised taxonomy जो पहले पायदान पे है, remembering, recall information, recognizing, listening, describing, retrieving, naming and finding, उसके ऊपर understanding, then applying, these are lots, low order thinking skill. आपके क्लास के 95% बच्चे अप्लाइंग तक अचीव कर सकते हैं. Now the main thing starts when the child starts to enter in the HOTS, high order thinking skills. Means when a child gets to analyze, when a child starts breaking information into parts to explore understandings and relationships, comparing, organizing, deconstructing, interrogating, finding, analyzing is the first stage of higher order thinking. If a child has successfully started analyzing, what the child will start doing next? He or she will start doing the evaluating, justifying a decision or course of action, checking, hypothesizing, critiquing, experimenting, and judging. Next is creating. Now again, टॉय कार हम लोग देते हैं बच्चों को, बॉयज को स्पेशली. उसमें कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो उसको संभाल के रखते हैं, उनका 1-2 साल तक वो टॉय कार का बॉक्स भी चलता है. फिर कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिसको उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस टॉय कार गिफ्ट करते हैं. दिन भर वो खेलते हैं, शाम में उसको खोल देते हैं. शाम में खोल देते हैं मीन्स व्हाट दे हैव डन, नाउ दे आर एनालाइजिंग. आई थिंक now they are breaking the parts of the body. Now the child wants to know कि मैं पीछे खींचता हूं तो आगे क्यों जा रही है.
नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटिंग इन द इवैल्यूएटिंग सेक्शन। वो स्प्रिंग्स को थोड़ा टाइट करेंगे या उसको और थोड़ा लूज करेंगे एंड दे विल ट्राई टू सी कि क्या होता है। पुराने वाले टॉय करके बड़े वाले व्हील्स लगा के चेक करेंगे कि क्या होता है। मैनुअल चलने वाली कार को रिमोट कार बनाने की कोशिश करेंगे एंड दे विल ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। नाउ ये वाली चीजें कुछ बच्चों में दिखती है बिकॉज दे आर एट द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, they are analyzing, evaluating and trying to create. Yes, they are definitely applying if they are having knowledge about something. So whenever we are teaching science, we should try that हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग तक जाके ना रुके, वो इससे आगे भी बढ़े, वो एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग के फेज तक जाए। अगेन वी स्टडी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हमें ये पिरामिड दिखता है। नॉलेज ज्यादातर बच्चे रिमेम्बरिंग वाले फेज तक पहुंचे, थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं, उससे थोड़ा सा कम अप्लाइंग तक, एनालाइजिंग तक उससे भी थोड़ा कम पहुंचते हैं, इवेल्युएटिंग तक फिर कम, और क्रिएशन वाले फेज पे काफी कम बच्चे पहुंच पाते हैं। व्हाट वी नीड टू फ्लैटन दिस। ये पिरामिड जिस दिन फ्लैट हो गया कि जितने बच्चे रिमेंबर कर रहे हैं उतने ही बच्चे क्रिएट करने पे भी पहुंच जा रहे हैं, आर टीचिंग स्ट्रेटजी विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वन। नाउ there are various teaching methods. One of them is inquiry based learning approach. Engage students effectively in the scientific process through hands-on experimentation, exploration, and discovery. Encourage them to ask questions, formulate hypotheses, design experiments, and draw conclusions. Fostering critical thinking and a deep understanding of scientific concepts. Now, if you are teaching science and students are thinking that you are a teacher of authoritarian nature, मीन्स आपके क्लास में बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं, डर के मारे मुंह बंद रख रहे हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ते जाओ, मैम जो पढ़ा रही है चुपचाप पढ़ते जाओ, नहीं तो डांट देंगे, पीट देंगे, बेइज्जती कर देंगे, घर पे कॉल कर देंगे। प्लीज चेंज योर एटीट्यूड सो दैट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी रिमूव फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्योंकि साइंस क्लास में अगर बच्चे खुलकर सवाल ना पूछ पाए तो वो सीख नहीं पाएंगे। समटाइम्स द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स might be disturbing, especially when you are teaching in secondary and senior secondary. So there the nature should be authoritative or collaborative, but our nature should never be authoritarian or detached. We read about these 4 words in classroom management techniques. classroom management के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि क्लासरूम मैनेज करने के 4 तरीके हैं। आप अथॉरिटेरियन मेथड यूज कर सकते हो जहां पे 100% डिसिप्लिन हो और वो सारी चीजें फॉलो जो टीचर चाहते हैं, बच्चे सवाल ना पूछे उनसे। ये वाली चीजें नहीं चलती साइंस क्लासेस में। अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अथॉरिटेटिव मीन्स that the discipline is ensured. The teaching strategy is somehow teacher centric only, but the students are listening to each and every rules and regulations and they are discussing it with teacher that how these things are happening. So authoritative can be useful in science class. The best can be collaborative when the teaching strategy is student centric, when the students are following your code of conduct that you have set for students, and with this they are enjoying the class. If you are telling something that is funny, they are ready to laugh. If you are telling something that can make them fear, they are ready to show that fear on their face. They are ready to ask questions about the discoveries or the reactions that you are teaching, or they may be ready to ask about the interpretations that they are having in their mind. So collaborative and authoritative are very nice whenever we are teaching science. Science should be inquirable. Either you ask or let them ask. When I finish my chapter, मैं जब chapter complete कर लेता हूँ science में, I am a chemistry teacher. मैं जब chapters complete कर लेता हूँ, मैं एक doubt class रखता हूँ last वाले period में. Means chapter खत्म हो उसके बाद जो मेरा very next period है, मैं उसको doubt class का नाम दे देता हूँ. And there are 2 things that I have done. The first thing is that I have entered in the class. Now either you ask the question
और आई विल आस्क द क्वेश्चन। या तो आप डाउट पूछ लो मेरे से, मैं आंसर कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अदरवाइज मेरे कुछ डाउट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने आपको पढ़ाया है, हमने साथ मिलकर पढ़ाई की है ये पूरा चैप्टर, तो अब आप आंसर कर देना उसको। नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, 80% स्टूडेंट्स go to their home and when my last class is happening, suppose आज मैंने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए तो वो घर जाएंगे और डाउट्स ढूंढ के ले आएंगे, क्योंकि आज अगर वो नहीं ढूंढ के लेके आए तो कल मैं पूछने वाला हूँ उनसे, तो वो डाउट्स ढूंढ के ले आएंगे। 20% व्हाट दे डू, दे स्टार्ट्स रीडिंग, वो पढ़ लेते हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लेंगे, वो एनालाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखने की कोशिश करेंगे, काफी सारे सोर्सेज पे जाएंगे, बिकॉज दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी कि अच्छा कल आप पूछिएगा, आप पूछ लीजिए, आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। दिस बोथ थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज मी एज अ टीचर। मैं यही तो चाहता हूँ कि बच्चे मेहनत करें, या तो अपने डाउट्स मेरे सामने लेके आए या फिर खुद से कई अलग रिसोर्सेज पर जाकर उन डाउट्स को सॉल्व कर ले और उनकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज कर दे। The conclusion is fostering critical thinking, deep understanding of scientific concepts. Now, this is a cartoon. You have a question, Robin. Robin says yes. Remember, you said learning can be fun. When exactly does the fun start? Does this happens to you? आपने कभी बच्चे को बोला कि अच्छा हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और वो चैप्टर आपने अगले दिन से स्टार्ट किया, बच्चों ने 2-3 क्लासेस तक झेला उसको, बाद में बोले कि सर या मैम आपने तो कहा था बड़ा मजा आएगा, बहुत बोरिंग सा चैप्टर लग रही है। तो लाइक द फिजिक्स टीचर कैन रिलेट, लाइक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगता है हमें, ह्यूमन आई बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगता है हमें, मोशन वगैरह भी है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बट लाइट इन जनरली अच्छा लगता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। सो टीचर्स गो टू द क्लास एंड दे से लाइट स्टार्ट करने वाले हम लोग, लाइट काफी मजा आएगा पढ़ने में, एंड अ वेरी, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स में होता है ये। और ऐसा इसलिए भी हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि लाइट तो हर जगह है, जहाँ नहीं है वहां हमने बल्ब लगा के लाइट कर रखा है, नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, लाइट तो हर जगह है। सो इट इज नॉट वेरी ऑकवर्ड टू से कि लाइट चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है, काफी बेसिक सी चीज है, काफी नेसेसरी चीज है हमारे लाइफ के लिए, और उसके बारे में अगर पढ़ना है तो मजा तो आना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट टीचिंग, वो सारी चीजें हम लोग जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनको मिरर्स वगैरह तक पहुंचते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनको फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह सब कुछ जब बताना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट्स टू गेट बोर। सबसे ज्यादा उनको मुश्किल तब आ जाती है जब टीचर रे डायग्राम बना देते, बोलते बाबू एग्जाम में आ सकता है ये, बनाने सीख लो, और 2 मिलीमीटर की भी गलती हुई तो फिर मार्क्स कट जाएगा, एग्जैक्ट चीज होनी चाहिए, एग्जैक्ट लाइंस गई, वो फन खत्म हो जाता है। सो दिस मे बी द क्वेश्चन कि आपने तो कहा था मजा आने वाला है, कब आने वाला है ये एक्चुअली मजा? नाउ समटाइम्स यू आर गिविंग योर 100%, और आपको लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ बताया, बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें तो आई हों, बट व्हाट इज द एक्चुअल रिस्पॉन्स? कुछ सो रहे हैं, आई नीड अ वीवी, आई स्टॉप लिसनिंग आफ्टर 5 मिनट्स, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा, दे हैव क्वेश्चन मार्क इन देयर माइंड, समवन इज गेटिंग बोर्ड। तो दिस मे हैपन कि आपको लग रहा है, एंड दिस हैपेंस व्हेन द टीचिंग मेथड इज टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक मेथड है, आपने अपना 100% दिया है, आपने वो सारे पॉइंट्स सारी चीजें सही सही बताई हैं, बट द प्रॉब्लम इज बच्चों से वो कनेक्ट नहीं हो पाया है। दैट कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी। मैं अपनी कई सारी ट्रेनिंग्स में ये कहता हूँ, जब मैं कनेक्शंस की बात करता हूँ ना, दैट दिस इज माय फोन, लैपटॉप थ्रू व्हिच आई हैव कनेक्टेड, एंड दिस इज अ हेडफोन यू कैन। नाउ जब मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग श्योर दैट दिस पर्टिकुलर हेडफोन इज कनेक्टेड टू द लैपटॉप। ये कनेक्शन इंश्योर करना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलता जाऊंगा और आपको आपकी स्क्रीन पर एक लड़का दिखेगा जिसका मुंह चल रहा है, आवाज नहीं सुनाई देगा, अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो। दैट कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी। मैं 1 घंटे बोल लूँ, मुझे लगा अरे यार क्या सेशन दिया है मैंने, बहुत बढ़िया सेशन दिया है मैंने, मजा ही आ गया, और आपने कुछ सुना ही नहीं क्योंकि कनेक्शन था ही नहीं।
That connection is required when we teach, the connection between teacher and student. And the next thing is, once you have established the connection, the next thing that appears, the next thing that is necessary is maintaining that connection. Establishing the connection and maintaining the connection, both are necessary. एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया मींस बच्चों से आप कनेक्ट हो गए, बच्चे सीखना समझना स्टार्ट कर दिए, बट द अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी लेस. आप गूगल करोगे 15 से 20 मिनट का अटेंशन स्पैन दिखेगा. आप पर्टिकुलरली इंडिया या टीनेज सेकेंडरी एज के बच्चों को के लिए देखोगे 7 मिनट्स का आएगा. बट एक्चुअली जब आप बच्चों को देखेंगे ना, आप देखेंगे कि बच्चों को 2 मिनट की एक वीडियो दे दीजिए, वो पूरा नहीं देखते. आप 5 मिनट उसको बैठा के कुछ बात समझाने लगिए, वो पूरी बात नहीं समझते. दैट मीन्स द अटेंशन स्पैन हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड. मैं मान के चलता हूँ 1 से 2 मिनट के बीच में होगा. दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको हर 1 या 2 मिनट के बाद इस कनेक्शन को मेंटेन करना होगा. आपको ये पता करना होगा कि क्या अभी भी कनेक्टेड हैं ये बच्चे मेरे से, या इनका कनेक्शन इनके बगल वाले दोस्त के साथ लग गया. अब ये डिस्कस करने लगे कि आज शाम को घूमने जाएंगे तो कौन सा वाला मोमोज खाएंगे. दिस इज वेरी नेसेसरी. Establishing the connection, maintaining the connection, and this is completely up to you. आप ये कैसे करते हैं, आप कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे करते हैं, कनेक्शन मेंटेन कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें. मैं कमेंट में देख रहा हूँ क्वेश्चनिंग, डाउट्स. यस, आप कर सकते हैं कनेक्ट बच्चों को इस तरीके से. आप बीच बीच में छोटे छोटे जोक्स करके कर सकते हैं. इफ द स्टूडेंट्स आर दैट काइंड ऑफ मैच्योर, आप उनको थोड़ी रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करके बता सकते हैं, सो दैट दे रिमेन कनेक्टेड टू यू. सो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने बच्चों को कैसे खुद से कनेक्टेड रखते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. व्हेन वी go to the class, we use different teaching strategy, we use different teaching aids to make our learners understand about any particular topic. While doing this, we have to be smart. And what is the meaning of smart? We have to be specific कि जो मैं समझा रहा हूँ मैं बस वही समझा रहा हूँ. If you are thinking, अगर आपने थोड़ा गौर किया, पिछले अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट से मैं कई सारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार घूम के आ रहा हूँ इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग. हर बार मैं घूम के आ रहा हूँ while connect, how to connect to the students, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा देना. सो आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. मैंने सोच के रखा है कि आज तो मैं बता के ही रखूंगा. नेक्स्ट वन इज मेजरेबल. आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने जो चीजें डिस्कस की, क्या आप उसको मेजर कर पा रहे हैं. दैट शुड बी मेजरेबल, अटेनेबल. हमें कुछ ऐसी बातें नहीं कर देनी कि हो ही नहीं सकता, है ना. जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट कर रहे हैं वो उस एज ग्रुप के लिए अटेनेबल होनी चाहिए, वो अटेन कर पाए उसको. रियलिस्टिक, नॉट रियल बट रियलिस्टिक. द थिंग्स शुड लुक रियल. Real can be sometimes hazardous for the students, so things can be should be realistic and time bound. क्योंकि आपका पीरियड का टाइम फिक्स है, आपके क्लासेस का टाइम फिक्स है. सो द गोल, द ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी टाइम बाउंड. नाउ what are the methods of teaching science? There is a direct instruction method where you have interactive lecture and you use deductive and deductive and inductive methods for teaching. Now there is demonstration which I use personally, and indirect I also use, means laboratory method. मैं छोटी छोटी बातों पर बच्चों को laboratory लेके जाऊंगा, उनको simulations videos के through, virtual labs के through connect करूंगा. And indirect instructions, I give them projects, I give them questions to solve, I inquiry with them. अब बच्चे मेरे आंख से, मुझे पता है कि मैं कौन सी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में सबसे खुराफाती सवाल कौन सा आ सकता है. क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, मैं एक एडोलेसेंट हूँ जिसके जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर रखा है. तो एडोलेसेंस एज में बच्चे के दिमाग में कौन कौन से सवाल आते हैं, वो सवाल आज भी मेरे दिमाग में है, वो आपके भी दिमाग में होंगे. तो जब मैं क्लास में जाता हूँ और जब मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे किसी बच्चे का चेहरा दिखता है कि उसके मन में तो आ गया है वो सवाल, तो उसके पूछने से पहले मैं ही पूछ देता हूँ कि चलो बताओ तो इसका आंसर. लाइक इफ वी टीच अबाउट सॉलिड्स, हम लोग पढ़ाते हैं ना दैट सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. बच्चे के दिमाग में आता है सर पाउडर, सर चीनी, सर नमक. जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की शक्ल ले लेता है, ये तो सॉलिड है क्या ये. तो बच्चा पूछे ना पूछे उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ. अब तो एनसीईआरटी भी पूछ लेती है, आप देख सकते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 पेज नंबर 4 आई थिंक.
वहां बकायदा 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी बेस्ड है। सो यू कैन चूज टॉपिक वाइज, ये डिफरेंट हो सकता है। आप कुछ टॉपिक के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू हेल्थ या टॉपिक हैजार्डस लाइक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाने के वक्त हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का ही फॉलो करना होगा। अदरवाइज फिर बच्चे दिक्कत में डाल सकते हैं टीचर्स को भी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें। बट फॉर द कॉमन टॉपिक्स we can move from direct to indirect to demonstration, whatever you think suitable for your pupil. Now these are just explanation of those things only. Now hands-on experiments and demonstration, it is very necessary, क्योंकि बच्चे भी कनेक्ट होते हैं ना। आप याद करिए व्हेन यू वर अ स्टूडेंट इन स्कूल, और अगर ऐसा होता है कि सारे एक्सपेरिमेंट टीचर खुद करके दिखा दे रहे हैं, आपको नहीं करने दे रहे, मजा ही नहीं आता। टीचर्स हमें भी मौका दिया करते थे कभी कभार, ग्रेजुएशन में आने के बाद तो पूरा मौका मिलता था। सो दैट शुड बी अलाउड। इट इज क्वाइट necessary to say that again this all should happen in your guidance। आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, बट हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी, डेमोन्स्ट्रेशन इज आल्सो नेसेसरी। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन साइंस लेसन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हम लोग कई तरीके से साइंस को यूज कर सकते हैं ना। पिक्चर्स में मैंने वीआर लगा रखा है, बट वीआर तक आई थिंक हम सभी नहीं पहुंच पाए हैं, बट स्मार्ट बोर्ड्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, इंटरनेट तक पहुंच चुके हैं। सिमुलेशन वीडियोज आर सिंपली अवेलेबल ऑन द गूगल। मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ, PHET आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको ज्यादातर सिमुलेशन वीडियो जो उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, PHET। तो वी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस। इट डजेंट मैटर कि आप किस एज के हैं या अब तक आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की है। व्हाट मैटर्स इज अब बच्चों को क्या चाहिए। नाउ दे आर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आई शुड ऑल्सो नॉट से एडिक्टेड, द टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब उनका जन्म भी हुआ ना, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हुआ। जन्म के पहले के भी जो प्रोसेसेस हैं, जब बच्चा अपने मदर की यूट्रस में, काफी सारी टेक्नोलॉजी के यूज करके उसके काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को दूर किया गया। तो टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। पढ़ाई से टेक्नोलॉजी को निकाल देंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, स्पेशली इन साइंस एंड मैथ्स। Fostering critical thinking and problem solving. If a child is coming to you with a problem related to the topic or subject, you should try to solve that problem, or at least you can show him a path जहां से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। वी शुड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा कुछ क्रिटिकल सोच रहा है, कुछ डीप थिंकिंग कर रहा है, वी शुड नॉट टेल कि नहीं नहीं इतना जरूरत नहीं है, इतना मत सोचो, इतना मत पढ़ो। प्लीज फॉस्टर दैट, प्लीज मोटिवेट दैट स्टूडेंट। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन साइंस क्लासरूम, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लर्नर्स, VAR के, विजुअल ऑडिटरी रीडिंग राइटिंग स्किल्स एंड कैनेस्थेटिकल्स। सो द इंस्ट्रक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड। आप अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ही अलग अलग टाइप के लर्नर्स जो है वो सीख पाएंगे। आई ऑलवेज से, जब हम लोग PPT दिखाते हैं ना, लाइक दिस टाइम, जब ये PPT, ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट टू से दैट अगर 3000 लोग इस मीटिंग में हैं, तो 700-800 लोग तुरंत पहुंच रहे होंगे वर्ड्स पे, एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढ ले रहे होंगे, वो कहीं ग्रामेटिकल एरर्स मिल जाती होंगी, या वो पॉइंट उनको काफी फैसिनेटिंग लगता होगा, वो उसको नोट कर लेते होंगे। बिकॉज दोज आर द रीडिंग राइटिंग स्किल्स काइंड्स ऑफ लर्नर्स। कुछ ऐसे होंगे जिनका ध्यान पिक्चर्स पे जा रहा है, एंड दे आर लुकिंग कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पीछे कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं, कौन सी भाषा में है। दे आर विजुअल लर्नर्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद हेडफोन लगा रखा होगा, PPT पे ध्यान नहीं होगा, वो बस मेरी बातें सुन रहे होंगे। दे आर ऑडिटरी काइंड ऑफ लर्नर्स। और कुछ ऐसे होंगे जो नोट करके रखेंगे, क्लास में जाके यूज करेंगे, तब मानेंगे कि हाँ जो उन्होंने पढ़ाया वो बताया वो सही था या गलत। दे आर काइनेस्थेटिकल लर्नर्स। इन सेम वे हमारे क्लास में भी ऐसे ही 4 टाइप के बच्चे हैं। सो आर इंस्ट्रक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड, ताकि चारों टाइप के बच्चों को फायदा मिले। इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, अगेन ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रियल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करना होगा जब भी कोई चीज हम लोग बता रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। आप सभी हेलन केलर के बारे में जानते हैं।
When I was reading a novel, जब मैं स्कूल में था तभी मुझे पढ़ाया गया था वो नॉवल हेलन केलर का। मुझे एक बात बड़ी अच्छे से याद है that when she was not able to see and when she was trying to learn about the things around her, जो उनको सिखा रही थी, वो उनको बताने की कोशिश कर रही थी अबाउट वाटर, ताकि वो पहचान जाए पानी को। एंड फॉर दैट शी यूज्ड टू आई हैव केप्ट अ बॉटल, शो हर अ मग। सपोज मैं बॉटल दिखाता हूँ कि ये लो, इसमें ना पानी है। नाउ इमेजिन अबाउट अ ब्लाइंड पर्सन, उसको आप हाथ में मग, ग्लास, जग, बाल्टी पकड़ा दे तो बोलो इसमें पानी है। विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पानी है क्या? वो जो बर्तन है वो पानी है या उसके अंदर जो लिक्विड है वो पानी है? द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर, या इस टाइप के कई सारी चीजें हो सकती हैं। सो do not hesitate to expose the student to the real life problems. You are the teacher, you have the solution, expose them to the problem, let them think, let them interpret, let them elaborate, let them find the solution. If they are able to find the solution, praise them. If they are not able to find the solution, please solve it for them and tell them that these can be the solutions. Now, assessing and evaluation, student learning in science. दिस इज अ लेसन प्लान। आफ्टर दैट वी विल गो टू द असेसमेंट पार्ट, और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। लेसन प्लान में क्या क्या होना चाहिए? हु एम आई टीचिंग, मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा, एंड हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। आपके लेसन प्लान का 4 गोल यही होना चाहिए बस। किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ाऊंगा, और समझ में कैसे आएगा कि उन्होंने समझा है कि नहीं समझा। इसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बनाइए, एवरीथिंग विल गो फाइन। These are the steps of preparation of lesson plan. मैं अगेन इस पे डीप नहीं जाऊंगा, just take a screenshot and keep it to yourself. Take a screenshot, flowchart, ये अगेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सारी चीजें हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। This is for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Now, when we see, जब हम लोग उस वर्ड को पढ़ते हैं ना, तो भाई फेयर सिलेक्शन के लिए ना सभी को एक ही एग्जाम देना होगा, चलो पेड़ पे चढ़ जाओ, बस इतना सुनकर तो अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, फेयर एग्जाम है तो एक ही टाइप का एग्जाम होना चाहिए, तभी तो एक ही टाइप से रिजल्ट आएगा। बट व्हेन यू सी द स्टूडेंट्स, यू नो द रिजल्ट, कौन जीतेगा आपको पहले से पता है। वी डू नॉट एक्चुअली नीड टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन हियर। नाउ दिस इज important so that we can understand that evaluation के tools and techniques क्या होने चाहिए। ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल आप ले रहे हैं, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, सॉफ्ट आंसर टाइप, रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप, कंप्लीशन और मल्टीपल चॉइस, ये क्या है, क्यों है, और आपके क्लास के लर्नर्स कैसे हैं। अगेन दिस इज अ जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन के लिए जो दिया जाता है। There will be an annual exam based on entire syllabus. The annual examination will be an 80 marks and 20 marks weightage shall be for internal assessment. Out of 80 marks annual examination, 68 marks weights shall be of theory and 12 marks weights shall be for practical based questions. For internal assessments, again ये general instructions दिए गए हैं। Now, particularly about 68 marks weightage. When we set questions for these 68 marks, we need to understand about the learners, the variety of learners that we are having in our class, in our school, in our campus. And according to that only we have to set the questions. Assessment for learning, 5 key strategies are there: sharing learning expectations, questioning, feedback, self-assessment, and peer assessment. What is this? I can ask the relevant question and use different types of scientific inquiries to answer them. I can identify common appliances that run on electricity. These are some things that helps in evaluation or assessments. आप इस तरीके के चार्ट्स में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप अपने क्लासरूम में लगवा सकते हैं। These things give a mindset to the students कि उनको क्या करना है। No child left behind. जब आप बच्चे को से एक टेस्ट लेते हैं ना, क्लास टेस्ट, पर्टिकुलरली अबाउट क्लास टेस्ट,
बच्चों के दिमाग में यही आता है जो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। इज दिस द टेस्ट टू टेस्ट अस फॉर द टेस्ट, टू सी इफ वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। क्लास टेस्ट या ओरल टेस्ट हमारे हम लोग जो लेते हैं ना, बच्चे ऐसा ही सोचते हैं कि क्या ये टेस्ट एक टेस्ट है, ये जानने के लिए कि हम लोग उस टेस्ट में होने वाले टेस्ट के लिए तैयार है या नहीं। Students learn in ways that are identifiably distinctive. The broad spectrum of students and perhaps the society as a whole would be better served if disciplines could be presented in a number of ways and learning could be addressed through variety of means. हमने यही वाली बातें डिस्कस की हैं, I think. So I would like to request you that please start looking for the different ways that will make your science class effective, more effective, I should say, so that the learning should be more effective. अगेन ये बातें जो हैं वो हमेशा जनरल रहेंगी। हम लोग ट्रेनिंग्स लेंगे, हम लोग वेबिनार में आएंगे, हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा डिस्कशन हमेशा टू हो, इसलिए मैं चैट बॉक्स में नजर रखता हूं, आप चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उन बच्चों को जानता हूं जिनके क्लासेस में मैं रेगुलरली जाता हूं। आपके क्लासेस में जो बच्चे बैठते हैं उनको आप जानते हैं। यू आर द हीरो ऑफ इट, सो यू हैव टू फाइंड योर स्टंट कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा स्टंट यूज करोगे, सो दैट द टीचिंग strategy, the teaching, the learning becomes more effective. Either it is science, maths, or any subject of arts or humanities. It is your thing to find a particular way. Now I'm looking at the chat box. We have few minutes left. So if you have any doubt, if you have any query, if you want to suggest me something, मेरे से कुछ गलती हुई है, if you want to point out, मैग्नीशियम वाली मैंने देख ली है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं काफी सारा चैट बॉक्स देख रहा हूँ। थैंक यू। It's good to know that ठीक ठाक पढ़ा दिया मैंने।